अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर टेक्निकल अहमद यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ फैक्ट्री रीसेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल अहमद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें, क्योंकि हम काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं इस वजह से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन और कमेंट करके लाजमी से बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अ फैक्ट्री रीसेट erasers all user data and configuration settings on a device like smartphones, tablets or laptop. Unlike merely installing applications or erasing a user profile, a factory reset should return a device to a now good factory state. The configuration the device ships in when it is sent to a customer required all in entails setup tasks to be performed. A factory reset will preserve no such cache files, image, media, password or other data or users may have saved or downloaded with whilst using a device. It is the best to think of a factory resets like a clean slate and modifications and changes that have occur as a result of user activities are swapped always, but the base layer of the device software and firmware remains safely intact. How do I factory resets? To factory reset any smartphone, tablet or laptop, you will not you want to look up documentations published by the device manufacturer. Otherwise, your best bet is to open the settings application on your device, is search for terms like factory sites, swipes off or erase all content and settings. Methods and exact names for the factories resetting vary by manufacturer, operating systems and OS versions and device types. It's important to make sure you actually performs a full factory reset and not merely an app or user setting only wipes, which should have leave sensitive data on a device. How to factory reset Android? Open the setting app, go to system, go to reset options, tap erase all data factory reset and follow the prompts. How to factory reset Samsung? Open the setting app, go to general management, go to reset, tap factory and reset and follow the prompt. How to factory reset iOS, iPhones, iPads? Open the setting, go to general, go to transfer or reset iPhone, iPads, tap erase the settings and it content and setting at the bottom of the screen and follow the prompts. How to factory resets Mac OS? Open the system setting apps, go general, go to transfer or resets, click erase all contents and settings and follow the prompts. How to factory reset Windows 10 and Windows 11? Open setting, go to system, go to recovery, go click on reset this PC, click remove everything. How to factory reset Chrome's OS, Chromebooks or Chromebox? Open settings, choose advanced, choose reset settings, click resets, confirm by clicking restarts. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी सी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी तो बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और लाजमी तो बताइए कि हम नेक्स्ट टॉपिक किसको
कवर करें। तो आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो मिलेंगे। तो आज की वीडियो इतनी थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।